This one is an interesting problem, exactly electrical J3. So इसमें बेसिकली करना क्या है, इसमें अगर आप प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन पढ़ें और इसमें इनपुट आप देखें तो इनपुट इज़ बेसिकली 2 पॉइंट्स. एक लाइन में पहला पॉइंट है इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, दूसरे लाइन में दूसरा पॉइंट है इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और फिर यू हैव दिस समथिंग कॉल्ड एनर्जी. ये इतनी एनर्जी है आपके पास स्पेंड करने के लिए इन ऑर्डर टू रीच फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट टू द सेकंड पॉइंट. अब आपने एग्जैक्टली इतनी एनर्जी में ही पहुंचना है. अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी हुई और पहले पहुंच गए, दैट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट. आपके पास अगर कम एनर्जी हुई और डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट रीच देयर. सो द प्रॉब्लम इज आपने बताना है कि आपके पास अगर इतनी एनर्जी गिवन है तो आप क्या एग्जैक्टली इस एनर्जी में उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते. मिसाल के तौर पे लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से यू हैव 2 पॉइंट्स. let's color this one as the red one. So basically let's say that this was आपका पहला point in the problem. Obviously हम थोड़ा सा different points ले रहे हैं और दूसरा point जो है that's going to be somewhere over here, right? और energy let's say आपके पास थी I don't know, let's say शुरू में हम कह लेते हैं for the sake of example 2 units. प्रॉब्लम के मुताबिक अगर आप एक यूनिट मूव करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, बाय द वे यू कैन नॉट मूव डायगोनली, दैट्स व्हाट यू कैन नॉट डू. अगर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दैट इज गोइंग टू कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट. सो फॉर एग्जांपल आप इस यूनिट पे मूव करते हैं, आपकी एनर्जी जो है वो बाकी रहेगी 1. आप एक और स्टेप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपकी एनर्जी रहेगी 0 और यू आर स्टक हियर एंड यू कैन नॉट रीच द डेस्टिनेशन. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स. You cannot go there, right? Okay, now what if अगर आपके पास जो एनर्जी है that is let's say 7. अगर आपके पास एनर्जी है 7 तो आप पहले बैक चले जाएं, फिर अप चले जाएं, फिर फॉरवर्ड आ जाएं. आपके पास 3 यूनिट स्पेंड हो गए, फिर 1 2 3 यूनिट और स्पेंड कर लें, 6 यूनिट स्पेंड हो गए, और 1 यूनिट आप ऊपर जाएंगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे और आपके पास एनर्जी टोटल बचेगी दैट इज 0. सो दिस इज आवर सोल्यूशन. यस, वी कैन गो टू आवर डेस्टिनेशन इन एग्जैक्टली दिस एनर्जी. अब आप कह रहे हो कि ऑब्वियसली इससे पहले भी पहुंच सकते हैं हम, लेकिन अगर हम इससे पहले पहुंचेंगे तो हमारे पास एनर्जी जो है वो लगेगी 1 2 3 4 5. तो हम 5 यूनिट्स में पहुंच गए, बाकी 2 यूनिट्स हमारे बचे हुए हैं. हमें बताना है कि हम पूरे के पूरे 7 यूनिट्स में किसी तरह घुमा के वापस यहाँ पे पहुंच सकते हैं या नहीं. दैट इज़ द प्रॉब्लम. सो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आप पहले लेफ्ट जाने के बजाय आप पहले नीचे चले जाओ और फिर वापस आ जाओ, और समथिंग लाइक दिस, एंड देन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन. तो कई पाथ इसके हो सकते हैं. हाउ डू वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम? एक तो तरीका आपके जहन में आ सकता है कि लेट्स चेक for all possible paths, like kind of like brute force approach. But this problem is far simpler than that. How? Let's talk about that. So let me first erase these values and let me redraw the 2 points that we had earlier, right? So this one and let's say this one. अब लेट्स से आपके पास एनर्जी जो इनिशियली बिगिनिंग एनर्जी थी दैट वाज 7, राइट. अब आप क्या करोगे? अब आप इन दोनों पॉइंट्स में मिनिमम डिस्टेंस देखोगे कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है. अब यू नो कि आप डायगनली नहीं जा सकते. सो मिनिमम डिस्टेंस के लिए वी हैव टू गो आइदर राइट और अप, डिपेंडिंग ऑन कि ये पॉइंट जो है वो उससे ऊपर है कि नीचे है. सो राइट, अप, राइट, दिस इज वन पॉसिबल way to go there, and the minimum distance is 5. 1 2 3 4 5. और दूसरा तरीका यहाँ पे जाने का है, आप 3 यूनिट्स फॉरवर्ड जाएं और 2 यूनिट्स ऊपर चले जाएं. सो दिस इज ऑल्सो 5. या फिर आप पहले 2 यूनिट्स ऊपर चले जाएं और बाद में 3 यूनिट्स राइट पे चले जाएं, दैट इज ऑल्सो 5. सो बेसिकली ये तीनों जो तरीके हैं, इन तीनों से यू गेट द मिनिमम डिस्टेंस 5. अच्छा, अब बात यहाँ पे नोट करने की कि आप यहाँ पे पहुँच तो गए हो,
लेकिन इस पॉइंट पे मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपके पास एनर्जी बाकी कितनी बची है, दैट्स द पॉइंट। और अगर हम यहाँ से देखें तो 7 - 5 हमारे पास 2 यूनिट्स एनर्जी के बचे हुए हैं। अब आप अपनी डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी खड़े हुए हो और आपको 2 यूनिट्स मजीद वेस्ट करने किसी तरह से, तो वो वेस्ट कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि हम एक जंप यहाँ पे लगाते हैं फॉरवर्ड और एक जंप वापस लगा देते हैं। हम अपनी जगह पे वापस भी आ गए और हमारी जो एनर्जी थी वो भी कंप्लीटली एक्सपेंड हो गई, एंड hence we can reach the destination in 7 units of energy. Let's take another example. So उस एग्जांपल के अंदर अगेन पॉइंट्स हम ये रखेंगे, लेकिन हम एनर्जी यूनिट्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट कर देते हैं। लेट मी चूज अनदर कलर, लेट्स से रेड कलर हियर, रेड कलर देयर, एंड नाउ अगेन स्टेप 1 इज टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस जो कि आप डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए यू नीड टू have. So in this case again the minimum distance is going to be, let's say, this 5 units. अब 5 units आप चल गए और आपके पास एनर्जी जो थी, let's say in this case we make the energy different. Oops. We make it what, let's say 11, right? अब 5 यूनिट्स आप चल गए हो, बाकी एनर्जी आपके पास बची है 6 यूनिट्स और आप यहाँ पे खड़े हुए हो। अब आपने 6 यूनिट्स एनर्जी को वेस्ट करना है किसी तरह से। आप कहीं से भी घूम फिर के आ जाओ, और अगर आप वापस डेस्टिनेशन पे पहुंचे हुए हो और आपके पास 6 यूनिट्स बचे, 0 यूनिट्स बचे हैं, ऑल एनर्जी हैज बीन स्पेंड, तो इसका मतलब है कि यू कैन रीच द डेस्टिनेशन इन दिस एनर्जी। सो अगेन अब एनर्जी यहाँ पे खड़े होकर कैसे वेस्ट करेंगे जो एक्स्ट्रा बची हुई है? यू नो, गो राइट गो लेफ्ट, गो राइट गो लेफ्ट, गो राइट गो लेफ्ट, ये करते रहें अंटिल कि आपकी एनर्जी जीरो होती है और यू आर एट द स्पॉट। सो अगर आप 3 दफा करेंगे गो राइट गो लेफ्ट, तो आपकी जो 6 की एनर्जी है दैट बिकम 0 एंड यूर एग्जैक्टली एट द स्पॉट, एंड हेंस यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन इन 11 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। लेट्स चेंज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेट्स से हम 11 की बजाय हम इस दफा करते हैं 14। तो 14 यूनिट्स में हम कैसे पहुंचेंगे? पहले तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, एंड दैट इज बेसिकली 9 यूनिट्स लेफ्ट, राइट? अब आप देख रहे हो कि जो पिछला यूनिट पिछली दफा बचा हुआ था दैट वाज एन इवन नंबर। इन दिस केस दिस इज एन ऑड नंबर। अगेन आई एम थ्रोइंग अवे हिंट्स, यू नो। सो बेसिकली अब आपने ये 9 यूनिट्स वेस्ट करने यहाँ पे खड़े हो गए। वो आप कैसे करोगे? अगर आप बैक एंड फोर्थ जाते हो, आप फॉरवर्ड गए, वापस आए, फिर फॉरवर्ड गए, वापस आए, फिर फॉरवर्ड गए, वापस आए, और एक और दफ़ा फॉरवर्ड गए, वापस, यानी कि 4 दफ़ा आपने आगे पीछे गए, तो आपके पास 8 यूनिट एनर्जी स्पेंड हो गई और आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आपके पास स्टिल 1 यूनिट बचा हुआ है वेस्ट करने के लिए। और आप अगर 1 यूनिट कहीं किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो फिर आप वापस नहीं आ सकोगे। इसका मतलब है कि यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन इन 14 यूनिट्स। लेकिन अगर 13 यूनिट्स होते तो फिर 13 - 5 दैट इज 8 units of energy remaining, or 8 units of energy remaining, and you're already at your your destination, तो फिर you can go back and forth 4 times, आपके पास 0 energy बच जाएगी और you're still there. So this is basically the essence of the problem, कि आपके पास पहले you have to find the minimum distance from your starting point to the ending point, and then you have to find out कि आपकी energy कितनी बची हुई है. And the trick is again कि energy अगर आपकी आपने बस जो बची हुई एनर्जी है ना वो वेस्ट करनी है और फिर अपनी वापस डेस्टिनेशन पे आना है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि किस तरह किस अमाउंट की एनर्जी बची होगी, इज इट इवन, इज इट और वट एवर, तो फिर देन यू विल बी एबल टू वेस्ट इट एंड देन यू विल बी कमिंग बैक टू योर डेस्टिनेशन. So yeah, that's basically problem, what this problem is saying. And this is simple arithmetic प्रॉब्लम बेसिकली. इसमें कोई आपको फैंसी एल्गोरिथम्स की जरूरत नहीं है, और आई डोंट नो आपको प्रॉब्ली शायद लूप लगाने की भी शायद इसमें जरूरत ना पड़े, राइट? इट्स दिस प्रॉब्लम इज सो सिंपल. This is basically the second problem in our lecture, and this is called art. So basically इसमें अगर आप इनपुट देखें तो इट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड देन यू हैव गॉट
bunch of points, और एक point जो है one point in a single line, basically it's x coordinate comma and then it's y coordinate, so it's just 1 point per line and there are 5 points here in this case, but you know points multiple हो सकते हैं, लेकिन ये points है क्या, let's talk about that. Okay, so basically आपके पास एक artist है और उसने ब्रश से एक point बनाया canvas के ऊपर, that's too big, something like this, और उसने फिर ब्रश से दोबारा पॉइंट बनाया, लेट्स से चेंज द कलर, उसने तीसरा पॉइंट बनाया, और मुख्तलिफ पॉइंट्स उसने अपने ब्रश स्ट्रोक से बना लिए. कलर डजंट मैटर एक्चुअली, प्रॉब्लम के अंदर ऑल दैट मैटर्स इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पॉइंट, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट. सो आपने ये पॉइंट्स बना लिए और नाउ ही इज फिनिश्ड द आर्टिस्ट, एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फ्रेम दिस पिक्चर बेसिकली. अब आपने फ्रेम कैसे करना है? वन पॉसिबल वे टू फ्रेम दिस is you create a frame something like this, and that's too wide, so something like this. So this is one possible frame. लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू आवर डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन वो ये है कि अगर आप देखें तो दिस फ्रेम इज टू बिग फॉर दिस पिक्चर. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड द मिनिमम possible size of the frame जो कि इन सारे points को contain करते हैं. This frame is not minimum possible because there is a lot of space here, or there is also a bunch of space here, or there's a bunch of space here, right? So this is not minimum possible. What could be a minimum possible frame? One possibility is that you draw a line from this point, which is the point which has the biggest y, and then you basically go down, or you draw a point through a point which has the largest x value, और फिर आप चलते जाते हैं. This frame basically now contains all of the points and this is the minimum size. इससे छोटा frame आप कर नहीं सकते क्योंकि अगर आप इससे छोटा frame करेंगे तो कोई ना कोई point बाहर निकल जाएगा frame से. So this is what we need to find. एक्चुअली इसमें एक और छोटा सा इशू है, और वो ये है कि अगर आप प्रॉब्लम्स को गौर से पढ़ें तो इसमें आप देखेंगे कि उसमें लिखा है कि एनी पॉइंट दैट इज ऑन द फ्रेम ऑन द बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड इनसाइड द फ्रेम बेसिकली. तो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो फ्रेम के अंदर होने चाहिए. सो जब आप एक मिनिमम फ्रेम फाइंड कर लें तो ऑल यू हैव टू डू इज हर साइड में एक वन वैल्यू बेसिकली आप ऐड कर दें तो आपका फ्रेम जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा चारों तरफ से, एंड दैट्स व्हाट वी नीड. सो बेसिकली फाइंड द मिनिमम फ्रेम और उसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दें बाय वन वैल्यू एंड यू गेट द पॉइंट, यू गेट द फ्रेम, मिनिमम साइज फ्रेम, राइट? दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. ऑलराइट, अब ये फ्रेम जो है ये है क्या? इसकी जो आउटपुट पे आपने रिटर्न करना है वो इस मिनिमम साइज फ्रेम का लोअर लेफ्ट कोऑर्डिनेट रिटर्न करना है और अपर राइट कोऑर्डिनेट रिटर्न करना है. सो लेट्स सी इफ दैट्स द केस. आउटपुट स्पेसिफिकेशन इट सेज you need to return the bottom left corner of the rectangular frame and top right corner of the frame. So top right is this and bottom right is that. ये दो coordinates आपने इस frame के return करने हैं. How do we do this? अगर आप ये फिगर गौर से देखें तो आप देखेंगे कि दिस साइड बेसिकली दिस इज x min, यानी कि यहाँ पे आपका जो मिनिमम x कोऑर्डिनेट है इसके ऊपर से ये लाइन गुजर रही है वर्टिकल, और ये वाली साइड है दिस इज एसेंशियली x max. ऑरेंज की बात करूँ, अगर ब्लू वाले की बात करते हैं दैट इज x max plus 1. अगेन अगर आप यहाँ ब्लू वाले की बात करेंगे तो दैट्स x min minus 1, right? And similarly this thing here that is y min, or this thing is y max. So इस प्रॉब्लम के अंदर all we have to do is we have to find the values of x max, x min, y max and y min.
That's pretty much it. So now let's talk about how do we exactly do that. So let me just select all of this stuff and let me delete. And if we write here x min, x max, and then y min, and then y max, ये चारों वैल्यूज आपने फाइंड करनी है फॉर एवरी सिंगल पॉइंट. अच्छा, अब आप पहला पॉइंट इसमें डालेंगे कैनवस के ऊपर. जैसे ही पहला पॉइंट डालेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे एज यू कैन सी फ्रॉम द इनपुट 4462 लेट्स से. अब जैसा पॉइंट आप डालेंगे वैसे ही आपने ये चारों के चारों वैल्यूज को सेट कर देना है. शुरू में एक्स मिनिमम भी वही होगा, एक्स मैक्सिमम वही होगा, वाई मिन वाई मैक्स भी वही होगा. ये चारों वैल्यूज आपने हर पॉइंट डालने के बाद सेट कर दिया. अब आप दूसरा पॉइंट डालते हैं. अब अगेन आप ये चारों की चारों वैल्यूज सेट करेंगे. इसमें कुछ वैल्यू चेंज होंगी, कुछ नहीं होंगी. फिर आप एक नया पॉइंट डालेंगे और आप दोबारा से इन चारों की चारों वैल्यूज को सेट करेंगे. देखेंगे कि उसमें कौन सी आपकी सेट होती हैं. सो आप इस तरह करते जाएंगे, आप नए पॉइंट्स डालते जाएंगे और जैसे ही आप एक पॉइंट डालेंगे हर बारी में आप इन चारों वैल्यूज को सेट करेंगे. जब आप सारे पॉइंट डाल लेंगे तो एंड पे ये जो चारों वैल्यूज हैं दे विल रिप्रेजेंट योर फ्रेम, बेसिकली योर मिनिमम फ्रेम. और उस फ्रेम के ऊपर पॉसिबली कुछ पॉइंट्स लाई करते होंगे, लेकिन आपने उससे थोड़ा सा बड़ा फ्रेम रिटर्न करना है. एंड उससे बड़ा फ्रेम रिटर्न करने के लिए बेसिकली what you need to do is you need to reduce this a bit. So x min में से एक reduce कर दें, x max में एक add कर दें, because आपको यहाँ बाउंड्री और थोड़ी सी यहाँ बाउंड्री चाहिए. इसी तरह y min में से एक यूनिट आपने reduce करना, so that becomes here. और y max में से आपने एक add करना है, तो you get your boundary here. Now you have to think about कि हमारे पास ये x min, x max, y min, y max की values तो आ गई. Now what is the coordinate of the upper right corner and what is the coordinate of the upper left corner, and that is what you need to return. So think about it, solve this problem, and let's see if you can do it. The third problem is 2012 J4 Big Bang Secrets. Again इसमें थोड़ी सी बैक स्टोरी है, but the actual problem is pretty simple. तो इसमें अगर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन पहले से पढ़ी, और I highly recommend आप you read this description before viewing this video. तो इसमें आप देखेंगे कि you have to basically encrypt one word to another word, and the way to do it is using this formula encryption के लिए. लेकिन प्रॉब्लम इंक्रिप्ट करना नहीं है, प्रॉब्लम इसका उल्टा है, वो भी हम देखते हैं सून, राइट. सो इंक्रिप्शन के लिए ये जरा अपने जहन में रख लें फॉर्मूला. नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक फ्रॉम वन अल्फाबेट इज 3 multiplied by its position in the word plus this value k here, and the k is it's given in your input, it's always given k, right. और उसके बाद ये देते हैं encrypted word जिसको आपने डिक्रिप्ट करना है. Alright, so let's take a look at a quick example and let's see how the encryption works. And once we understand how encryption works, we'll be able to figure out how we can decrypt it. So, अगर आप इस configuration को देखें, let's say we have a word that's called Zoom with capital letters, right? इसको अगर हम vertically stack करके लिखें Z, O, O and M, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो Z है इसकी पोजीशन है हमारे पास 1. So यहाँ पे zero base index is not, the problem is considering basically starting from 1, it's not starting from 0 like we are used to. अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पहला लेटर है Z, Zoom वाली एग्जांपल में, इसके अंदर इसने 3 को मल्टीप्लाई किया है जूम की पोजीशन से इस वर्ड में विच इज 1, और फिर इसके अंदर k ऐड किया, k इज 3 इन दिस केस, जो कि इनपुट से आ रहा है. इनकी पोजीशन हम पहले लिख लेते हैं. सो इसकी पोजीशन होगी 2, इसकी पोजीशन होगी 3. बेसिकली इट्स जस्ट स्ट्रिंग के अंदर जो भी इसका इंडेक्स है दैट +1, यू नो दैट.
मुझे बताना नहीं चाहिए था ये, लेकिन ओके नाउ व्हाट। अब इसका हमने देखना है कि हमें बेसिकली करना ये है कि आपके पास कोई भी कैरेक्टर है, लेट्स से एल, इसको अगर आपने इंक्रिप्ट करना है तो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेप्स एस। फिर आप उतने स्टेप्स लेंगे और उस पे जो भी कैरेक्टर आएगा दैट इज योर इंक्रिप्टेड लेटर अगेंस्ट द ओरिजिनल लेटर, राइट। तो फर्स्ट हमें एस कैलकुलेट करना है और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने स्टेप लेने हैं टुवर्ड्स द राइट साइड सो दैट वी गेट इट्स encrypted character. Let's do it in this case, in case of Z. So the formula is simple and it was S equals number of steps that you need to take towards the right. That is equal to 3 multiplied by something called P, which is the position of that character in this word. It's not the character in this alphabet, it's the position of the word, the character in this word. So plus K, and K for our sakes is going to be 3, जो कि input से आ रहा है of course. So you get 3 multiplied by position of Z in this word plus K, and that becomes 6. So basically what is this? इसका मतलब है कि हमने Z से 6 स्टेप आगे की तरफ लेने हैं, you'll get your encrypted letter. अब यहाँ पे देखें तो Z से आगे तो कुछ भी नहीं है. अब इसका मतलब है अगर Z से आगे कुछ नहीं है तो then you have to wrap back all the way to A and start counting from there. अब यहाँ से अगर हम काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6, so this is our sixth character, and this is इसकी जो encryption है that becomes F. So Z को जब हम encrypt करेंगे that becomes F, right. So what about the next? Oops, I didn't want to delete this. Okay, now what about the next character? That's O. So O जो है अगेन अगर आप वही वाला फॉर्मूला लगाएं जो कि इसमें यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर आप गौर से पढ़ें तो the second letter is O, it has S equals to this formula 3 plus. If you apply this formula, what you get is 3 multiplied by 2 plus K is 3, or it'll always be 3 for this particular example, and that is essentially 9. और अगर हम O लेटर O पे हैं और लेटर O से हमने अब 9 स्टेप्स आगे की तरफ लेने हैं, so that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and that becomes X. So इसकी जो encryption है that is X. So similarly अगर हम तीसरे O की तरफ जाएं, तीसरा कैरेक्टर जो है, but it's still O. पहले कैरेक्टर पहली दफा O की जो encryption थी that was X. दूसरी दफा O की encryption is not X. So यहाँ पे पोजीशन डालने के लिए मकसद है कि अगर आपके पास सेम कैरेक्टर भी हो तो इसकी इंक्रिप्शन जो है इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. सो इसको डिक्रिप्ट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. So now what you need to do is again apply the formula, multiply by the character of the position of this character in this word, which is 3 plus 3. This comes out to be 12. और अगर आप O पे हैं, let me again delete all of these extra stuff. So अगर आप currently O पे हैं और यहाँ से अगर आप 12 स्टेप्स आगे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी 12 स्टेप मैंने लेना था but I've run out of alphabet. And once you've run out of alphabet और अगर आपके steps पीछे बचे हुए हों तो then you have to go back, wrap around and start from A, and this is the 12th character. So our O becomes in this case A, right. और अगर हम डॉक्यूमेंट देखें तो F X A we are going in the right direction basically. अब हमारे पास एक आखिरी कैरेक्टर रह गया है and that is M. अब M जो है इसका हम नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्यूट करें तो that is इसकी पोजीशन is 4 plus 3 which is K, and that equals to 15. और 15 अगर हम M पे खड़े हों और हम 15 स्टेप्स आगे लें, so we are here
15 स्टेप्स हम लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अब क्योंकि हमारा खत्म हो गया अल्फाबेट वी हैव टू wrap around and then we have to start from here A 14 and this is 15 और फिर हमारा जो encrypted character बनता है that is 15 so that's how it works the encryption right लेकिन आपने प्रॉब्लम में ये नहीं करना प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि आपने समझा अब आपने क्या करना है आपको एक्चुअली प्रॉब्लम में एक इनक्रिप्टेड वर्ड दिया जाएगा और आपने इसको रिवर्स करके वापस बताना कि ओरिजिनल वर्ड क्या था राइट सो दिस इज encrypted word and then this is the original word how do you do that उसके लिए again we have to do one simple example so let's do that and that simple example is let's say आपके पास इनपुट होती है k equals to 3 और आपके पास जो वर्ड है वो है let's say I J F now you have to think here आपके पास ओरिजिनल लेटर्स हैं X X और X इसका आपने नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्यूट करिए और वहां से आपने निकाला I राइट जो दूसरा कैरेक्टर था उससे आपने नंबर ऑफ स्टेप्स निकाले और आपने निकाला J और जो तीसरा कैरेक्टर था उससे आपने नंबर ऑफ स्टेप्स निकाले और उससे निकाला आपने F राइट सो फार सो गुड अब आपने करना क्या है अगर आपके पास पता चल गया लेट्स से नंबर ऑफ स्टेप्स ये हमें पता है कि दिस इज एट पोजीशन नंबर 1 दिस इज एट पोजीशन नंबर 2 एंड दिस इज एट पोजीशन नंबर 3 तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स हर किसी कैरेक्टर के निकाल सकते हैं इवन दो कि हमें नहीं पता कि वो कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या है लेट्स से पहले वाले केस में वी हैव नंबर ऑफ स्टेप्स मैं जरा फॉरवर्ड करके इसको कर रहा हूँ बट यू कैन कंप्यूट द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू रिक्वायर it's going to be number of steps 6 let me do the green color दूसरे स्टेप में number of steps you need is 12 and तीसरे केस में the number of steps you need is sorry this is not 12 this is 9 and then you have 12 steps अच्छा अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपने लेटर एक रैंडम लेटर में 6 ऐड किया so this is basically what you can think of it as not X per se, but you can think of it as a question mark. So question mark and question mark and question mark. You don't know what it is. So basically, आपने इस question mark में 6 steps add किए, तो you get to I. तो इसका reverse क्या होगा? You go from I towards the left side 6 steps. So अगर हमारे पास I जो है, it is here. And if we go from here 6 steps 1 2 3 4 5 6 so this is our character C that we were looking for right this is our original character C similarly J इस कैरेक्टर के अंदर हमने 9 स्टेप्स डाले तो आपको J मिला अब 9 स्टेप्स से आप पीछे जाएंगे J से अगर आप 9 स्टेप्स पीछे जाएंगे तो you get your original character and how do we do that so you are at J यहाँ से आपने 9 स्टेप्स पीछे जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 you get A so this was A we know that okay that's done and then similarly F F के अंदर basically अब क्या हो रहा है कि you are at F और you start from here अब आपने 12 steps पीछे जाना है then you will get this original character so 1 2 3 4 5 now you're basically you ran out of the alphabet अब once you ran out of alphabet और आपके number of steps still बचे हुए हैं तो you have to wrap around the other end and then you have to start from Z
So 1 2 3 4 5 and then 6 7 8 9 10 11 and this is the 12th step and we have the original letter T here. So basically word cat की जो encrypted version थी that is IJF और उसका reverse process when you reverse decrypt IJF you get cat back. So this is the process essentially. इसमें जो major trick है वो यही है कि when you have run out of the alphabet और आपके पास still steps मौजूद हों, then you have to wrap back and you have to start from the beginning. And how do we do that in code if you think about it? ये code problem है for lecture number 5 and that is 2018 S2 senior level problem, basically the second one. It's called sunflowers. अगर आपने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वीडियो पॉज करें और पहले इसकी डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह पढ़ें, इनपुट देखें, आउटपुट देखें और अटैम्प्ट करने की कोशिश करें. आइडियली तो आपको अटैम्प्ट करने की कोशिश पहले करनी चाहिए और फुली अटैम्प्ट करने की कोशिश करें. उसके बाद फिर यू रिज्यूम द वीडियो एंड सी कि हम किस तरह से एंड देन यू मैच योर अटैम्प्ट बेसिकली. तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस डिस्क्रिप्शन, आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज. इसमें है ये कि आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा विच इज़ द साइज ऑफ द सनफ्लावर्स इन अ ग्रिड. सो आइडियली जो मैट्रिक्स है उसकी जो ग्रिड है इट इज़ इंक्रीजिंग नंबर्स, बेसिकली रो में भी इंक्रीजिंग है और कॉलम्स में भी इंक्रीजिंग है. इसका मतलब है कि जो मिनिमम नंबर है इस ग्रिड में दैट शुड बी 1 विच इज़ इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर और जो मैक्सिमम नंबर होगा इस ग्रिड में इट इज़ गोइंग टू बी in the lower right corner. That is the information that is given to us. अब है ये कि आपके पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसको ना कुछ कई दफ़ा रोटेट किया हुआ है चिल्ड्रन ने, सब बच्चों ने, क्योंकि इसको रोटेट किया तो देन नो लॉन्गर मिनिमम नंबर इज एट द लोअर अपर लेफ्ट एंड मैक्सिमम नंबर इज एट द लोअर राइट, बल्कि द मिनिमम नंबर जो है वो किसी भी कोने में हो सकता है, राइट. सो इसमें आपने करना यह है कि there are 3 major steps to solve this problem actually. First you need to read this input and then you need to store it in a matrix form. Then you need to check if the matrix is valid. Valid का मतलब है कि जो इन चारों कोनों में से मिनिमम नंबर है that has to be the upper left corner. और अगर वो वैलिड नहीं है तो फिर आप रोटेट करेंगे और एंड देन रिपीट दिस प्रोसेस. बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं इसमें. एंड हाउ डू वी एग्जैक्टली डू दैट, अगेन मैं इसमें कोड में पूरा नहीं पूरी तरह इसको कवर करूंगा, बट आई विल जस्ट राइट अ बेसिक एल्गोरिथम एंड यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट. सो बेसिकली हम इसको, अगर ग्रिड है मेरे पास दी हुई है, ये देखिए ना, इसमें एक कोना रोटेट हुआ हुआ है ये. अब इसको अगर आप एक दफ़ा रोटेट करोगे तो मिनिमम नंबर यहाँ पे चला जाएगा, दूसरी दफ़ा यहाँ पे जाएगा, तीसरी दफ़ा अपनी असली हालत में आ जाएगा. जब वो वहाँ पे जाएगा तो इसका मतलब है कि इसके सारे नंबर्स इंक्रीजिंग होंगे इन द रोज, इन ऑल रोज, और इसके सारे नंबर्स इंक्रीजिंग होंगे इन ऑल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और जो रोज हैं दीज आर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऑलराइट, अब आपको वो रोटेट करते जाना बार बार, और जैसे ही ओरिजिनल हालत में ग्रिड आती है विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म, तो वैसे ही फिर आपको वो प्रिंट कर देनी है विच इज दिस वन, राइट. तो इसमें अगर आप इसको एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और वो उसकी अपनी हालत में ही ग्रिड आप प्रिंट करेंगे. इसमें ये नहीं पूछा कितनी दफ़ा रोटेट करने से आंसर आएगा, इसमें जैसा आपने आंसर प्रिंट करना है जो भी इसका ओरिजिनल आंसर है. और या सो द बेसिक प्रिंसिपल इज अगेन, अगर आप 4 दफ़ा से ज़्यादा रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि 4 दफ़ा के अंदर अंदर आपके पास आंसर आ जाना चाहिए. सो फॉर आई इन रेंज 4, let me just disable Copilot, disable. All right. अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे if एक फंक्शन आप बना लेंगे यूटिलिटी इज वैलिड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर लेट्स अज्यूम कि आपने वो किया हुआ इनपुट. अगर ये मैट्रिक्स वैलिड है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे. सो प्रिंट मैट्रिक्स की, ये भी हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है अपना खुद से. अगर मैट्रिक्स वैलिड नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे,
फिर आप बेसिकली इस मैट्रिक्स को रोटेट करेंगे वंस. So these three functions are the heart of this problem. आपको जो सबसे important function है that is the rotate one. आपको पता होना चाहिए कि अगर एक matrix given है तो how would you rotate its elements so that it becomes its rotated version. So basically ये जो column है 1 3 4 it will now become 4 3 1 as a row. So that this one is an interesting function. बाकी is valid is a very easy function क्योंकि is valid में आपने सिर्फ ये देखना है, is valid का मतलब है कि अपनी वैलिड फॉर्म में है कि नहीं. इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर इसका अपर लेफ्ट कॉर्नर जो है वो मिनिमम है तो देन इट्स अ वैलिड मैट्रिक्स, अदरवाइज इट्स नॉट अ वैलिड मैट्रिक्स एंड इट हैज टू बी रोटेटेड. अगर वो वैलिड मैट्रिक्स है तो फिर आपने इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के लिए आप नेस्टेड फॉर लूप्स लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपने वो करना है जिस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, देयर आर मेनी वेज टू डू इट. So this function is really simple. The print matrix जो है that is also pretty simple. The real core heart of this problem is how you rotate the matrix, and that's about it. So basically ऊपर जाके आप when you write these functions, def is valid. I'm not going to complete it. So assuming matrix के अंदर आपकी 2-dimensional list पड़ी हुई है, और then you have your function called print matrix. This is also easy, and then you have the heart rotate matrix. So think about it how this works, and once you figured it out, you have solved the problem. This is one of the questions from lecture number 5, and this is from 2017 J4 junior level, favorite times. This question is also pretty interesting actually. Again, अगर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी तो पॉज द वीडियो, पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ें, इसको अच्छी तरह समझें, इनपुट आउटपुट पढ़ें, और ये एग्जांपल्स जो हैं वो हाथ से करने की कोशिश करें, एंड देन वी विल come back. So then you can resume the video and take a look at the solution, basically. Not the solution, but we are going to discuss the strategies on how to solve this. Alright. So इसमें क्या ये रहे हैं कि आपके पास एक घड़ी गिवन है which starts from 12, और हमेशा जो टाइम है वो हमेशा 12 से स्टार्ट होगा. अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो अब यहाँ देखें, it starts at noon, 12 o'clock, and then it moves forward. So moves forward का मतलब है कि it goes in clockwise direction of course. So आप एक एक मिनट करके इसमें टाइम ऐड करते जाओगे, और so for example 12 o'clock, right? 12 o'clock के अंदर अगर आपने एक मिनट ऐड किया तो क्या बना? It becomes 12:01. Now you have to figure out whether is this an interesting pattern or not. You have to check, right? अब ये डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इंटरेस्टिंग पैटर्न किसे कहते हैं? अगर आप डिस्क्रिप्शन गौर से देखें तो इसमें है कि दिस इज काइंड ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज, यानी कि जितने नंबर्स हैं उसमें जो डिफरेंस है इनके बीच में वो एग्जैक्टली सेम होगा, तो दैट मीन्स कि इट इज एन इंटरेस्टिंग पैटर्न. सो 12:01 इज नॉट एन इंटरेस्टिंग पैटर्न. 12:34 इज एन इंटरेस्टिंग पैटर्न, क्योंकि इसमें हर डिजिट के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1, राइट? सो ये चार डिजिट्स का बेसिकली है टाइम. और फिर इसके बाद आपके पास अगला टाइम कौन सा आता है? वो आता है 12 बजे में. तो हमें और कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न नहीं मिल रहा है जिसमें सेम वो हो डिफरेंस. सो उससे अगला जो टाइम हमें मिल रहा है, अगर हम सोचें खुद से बैठ के, तो 12:34, फिर आगे जाओ 1 बजे. अगेन इसमें जो 1 बजे है दैट इज 0100, लेकिन उसको बेसिकली वो 3 डिजिट से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 3 डिजिट्स नंबर है, सिंगल डिजिट आवर्स बेसिकली. So 100 is not an interesting number. 111 is an interesting number. Why is that? Because इसका जो difference है that's 0. So you need to count this. Okay? And it's the same for all digits. और आपके पास अगला इंटरेस्टिंग नंबर कौन सा हो गया? 1 2 3. That is an interesting number. इसमें the difference is 1. So एक घंटे में आपको दो, बेसिकली 1 घंटा है ना, तो 1 o'clock से लेके 2 o'clock के बीच में आप कितना इंटरेस्टिंग नंबर इसमें फाइंड कर सकते हैं. लेट्स सी, 2 तो मिल गए, और क्या सकता है? 1
1:36। सो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। सो इसमें 0 था, इसमें 1 का डिफरेंस था, इसमें 2 का डिफरेंस है। और फिर इससे अगला हम कौन सा कर सकते हैं, 1:48। No, so basically this should not be 36, this should be 35. Now there is a difference of 2, and this should be 47. There's a difference of 3. ओके, 4 का डिफरेंस आ सकता है। 4 के डिफरेंस के लिए आपको चाहिए 1:50 और 1:50 समथिंग मिनट, राइट। तो 50 समथिंग मिनट वो फिर 2 बजे में चले जाते हैं, तो यू डोंट हैव अ नंबर विच इन 1 o'clock। तो 1 o'clock के अंदर आपको 4 इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिल गए। 2 o'clock के अंदर आपको कितने पैटर्न्स मिलते हैं, यू हैव 2 to 2, राइट। एंड देन यू हैव विच हैज अ डिफरेंस ऑफ 0, and then you have 2 and 4 and then 8, 2 4 7 actually, 2 4 6 I would say। so 2:46। this is a valid time। अब ये देखना जितने टाइम्स जो सारे वैलिड हैं और दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। इसके अंदर 2 का डिफरेंस है, श्योर। 3 का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं क्या, 2:50 और 58। 2:58। so that is a difference of 3। जो 1 का डिफरेंस था वो हमें कोई भी नहीं मिला यहां पे। एक्चुअली देयर इज 2 3 4, that's a difference of 1। इंटरेस्टिंग। सो अगेन 2 o'clock के अंदर भी हमें ये 2 पैटर्न्स मिल गए। व्हाट अबाउट 3 o'clock? सो 3 o'clock में द फर्स्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न कम्स फ्रॉम 3 to 1। अगेन द डिफरेंस इज -1, बट प्रॉब्लम ये नहीं कहती कि डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। प्रॉब्लम कहती है कि इट हैज टू बी द सेम तीनों के तीनों डिजिट्स में। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट मेक्स इट एन इंटरेस्टिंग टाइम। सो एंड यू कीप ऑन मूविंग। अगला आई थिंक इज गोइंग टू बी 333 विच इज अ 0 डिफरेंस। सो आप चलते जाएंगे और आप देखेंगे, आपने काउंट करना है कि 1 घंटे में 12 इन 12 घंटे में जब आप इससे घूम के वापस आते हो 12 पे, तो अंदर कितने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू काउंट। और फिर आपको बताएगा वो नंबर ऑफ मिनट्स विच इज गोइंग टू बी really big number। so for example यहाँ पे it's going to be let's say 180, या जो लिमिट दी हुई अंदर it's like 1 बिलियन की लिमिट दी हुई है। तो आपने 1 बिलियन दफा, या मतलब इतने ज़्यादा मिनट्स होंगे कि आपको इस क्लॉक के गिर्द मल्टीपल टाइम्स घूमना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कि उसके अंदर मल्टीपल पैटर्न्स कितने हैं, राइट। इसमें आप एक ट्रिक देख लें। अगर आप एक दफ़ा ये काउंट कर लेते हैं कि इसके अंदर 12 घंटे में कितने पैटर्न्स हैं, लेट्स से वो हमारे पास हैं x पैटर्न्स, तो अगर हमें क्लॉक के गिर्द 6 दफ़ा घूमना पड़ जाए तो हमें वो कोड चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधी तरह कहेंगे द नंबर ऑफ पैटर्न्स इज 6x, राइट। लेकिन कोई ऐसा मल्टीपल कोई ऐसा नंबर ऑफ मिनट्स का विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12, तो फिर हम देखेंगे कि रिमाइंडर क्या है और क्वोशंट क्या है। क्वोशंट इज गोइंग टू बी द मल्टीपल ऑफ 12 प्लस जो रिमाइंडर टाइम है, रिमाइंडर टाइम के अंदर कितने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आते हैं, देन वी विल ऐड दैट एंड वी विल गेट आवर वैल्यू बैक, वैल्यू बेसिकली, राइट। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। हाउ डू वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो let me just quickly delete this। So basically we start from time equals to 1200 and this is just an integer, it's not a string। again string करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा और खुद से मैनेज करना पड़ेगा ये। and count which is going to count the number of patterns, we start from 0। and the d is the number of minutes, basically d equals to int input। अब यहाँ पे अपने ट्रिक क्या है, for I in range d।
सो बेसिकली डी स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ मिनट्स. आपने इतने मिनट्स 12 o'clock से आगे जाना है और फिर आपने देखना है अंदर. यू नीड टू फाइंड आउट विच पैटर्न्स आर द इंटरेस्टिंग वंस. सो नंबर 1 जो चैलेंज है दैट इज एडवांस द टाइम बाय 1 minute. सो बेसिकली टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है 12 o'clock से, आपको एडवांस करना है 1 minute. लेकिन आपको इसका ख्याल रखना है कि व्हेन इट गोज टू 12:59 बेसिकली, सो लेट्स से यहाँ पे आपके पास 12:59 आ गए. जब आप इसको एडवांस करेंगे तो पाइथन तो इंटीजर में बस इंक्रीमेंट ही कर रहा है ना, तो इट्स गोइंग टू से 1260, बट 1260 इज नॉट अ वैलिड टाइम. तो आपको ख्याल रखना है. देन यू हैव टू कन्वर्ट इट टू 1 o'clock एंड सो ऑन. And then what you need to do is, once you have advanced the time, you need to check interesting sequence. And once you have checked the interesting sequence, what do? You just you count it if valid. So if valid, count it, और end पे जाके then you simply print count and that's it. So that's what you do. Again ये दो major problems आपके पास हैं, which is to advance time by 1 minute and to check whether if it's an interesting sequence or not. And both are very easy to solve basically. Advance by 1 minute ये आप कैसे करोगे? Let's call it, for example, a function called tick time. So basically it takes a parameter as the time and then it returns the new time, which is 1 minute after 1 minute इसमें increase करके. And how do you write that? That's a function which which you need to write. इसमें अब होगा क्या? इसमें आपने पहले minutes को separate करना है, फिर अपने आवर्स को सेपरेट करना है, और आपने मिनट्स के अंदर एक इंक्रीमेंट करना है. और अगर मिनट 60 से ज़्यादा होते हैं तो फिर मिनट 0 हो जाएंगे और आवर्स इंक्रीमेंट हो जाएगा. और अगर आवर्स जो हैं वो 12 से ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको वापस वो लेके जाना है 1 o'clock पे. इट्स नॉट 13 देन, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग विद 24-hour क्लॉक, वी आर वर्किंग विद 12-hour क्लॉक. लेकिन आपकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन में है कि अगर आप 13-hour क्लॉक से भी काम करते हो तो फिर देन यू हैव टू फिगर आउट कि उसमें कितने चक्कर आपने लगा लिए हैं. राइट, सो वंस यू हैव फाउंड दिस, और वंस यू हैव आल्सो figured out how to check, you create just a function, a boolean function which returns a boolean value basically. If check interesting time, so if it makes an interesting sequence, then you do count plus equals to 1, and that's pretty much it for the general algorithm, right? So this is the algorithm. और आपने अब function लिखना है which is called tick, और दूसरा function आपने लिखना है which checks basically if this time makes an interesting pattern or not. Basically इनके जो सारे digits को आपने अलग करना है और फिर उन digits में आपने देखना है कि difference क्या आ रहा है. If it's the same difference, then it is an interesting pattern. So yeah, and that's about it. So that's what the problem is all about. इसमें सिर्फ एक कैच है, और वो कैच ये है कि अगर आपका नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो नंबर ऑफ मिनट्स बेसिकली वो आपके 1 बिलियन आ गया फॉर एग्जांपल, तो आपका प्रोग्राम अपने टाइम लिमिट में रन ही नहीं कर सकेगा. उसके लिए फिर आपको ना स्पेशलाइज्ड इस लूप को कम करना पड़ेगा. और इस लूप को कम कैसे करेंगे? अगेन लाइक आई डिस्क्राइब्ड हियर, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि यू हैव टू देन सी कि कितने चक्कर आपके लगे हैं, और आपको पहले देखना है कि एक चक्कर में कितने पैटर्न्स हैं, और एक चक्कर में कितने पैटर्न्स हैं वो आप कैसे देखोगे? वो आप फिर मैनुअली इस लाइन को कमेंट कर दोगे, और आप फिर जाके इसमें देखोगे कि d इक्वल्स टू 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं. सो 1 hour is 60 minutes, और 12 घंटे में कितने मिनट्स हो गए? मल्टीप्लाई बाय 12.
सो दीज मैनी मिनट्स, इसके लिए लूप चलाएंगे, इसमें काउंट देख लेंगे कितना आता है पहले डिबगिंग के लिए, यू डोंट हैव टू सबमिट दिस। एक दफा आपके पास काउंट आ गया, उसको आप कह देंगे लेट्स j equals to my count, whatever value that this printed, basically it could be any integer. So basically j number of पैटर्न जो है वो एक 12 घंटे के साइकिल में आते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर एक नंबर आपको दिया जाता है 10,000, अब आपने देखना है कि 10,000 मिनट्स में कितनी दफा ये क्लॉक 12 घंटे के कितने चक्कर लगेगी, वो हम कैसे देखेंगे। सो 10,000 मिनट्स डिवाइडेड बाय 12 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। सो 12 घंटे में बेसिकली आपके पास होते हैं, लेट मी क्विकली फिगर दिस आउट, क्लियर पाइथन 3, 12 मल्टीप्लाइड बाय 60, सो आपके पास 720 मिनट्स आ गए। सो इफ यू डिवाइड this by 720, what you get is so 10,000 divided by 720, you get 13.8. so basically आपको 13 चक्कर तो कंप्लीट लगाने हैं, तो 13 मल्टीप्लाई बाय j, ये आपके नंबर ऑफ पैटर्न्स हो गए। आपको कतन फॉर लूप एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जस्ट एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको मिल गया ये। अब जो बाकी नंबर आपने मिनट्स हैं जो कि 12 घंटे से कम है, वो कितने हैं, वो हमें किस तरह पता चलेगा। दैट इज गोइंग टू बी 10,000 mod 720, एंड दैट इज बेसिकली 10,000 mod 720, दैट 640 मिनट्स के लिए फिर आपने इस लूप को चलाना है, और उसमें फिर आपने 640 मिनट्स के अंदर अंदर पैटर्न्स काउंट करने हैं, और फिर आपने उसको उसमें ऐड करना है, और आपका लूप जो है वो सिर्फ इसी के लिए चलेगा फिर 640 मिनट्स के लिए, जो 12 घंटे से कम है। जो बाकी आपने फेरे लगाने थे इतने बड़े बड़े, वो आपने 13 फेरे नहीं लगाए, और क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, अगर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल ये लिमिट से बराबर होती 1 बिलियन, तो आपका प्रोग्राम तो कभी भी नहीं चलता। वो आपको इसको फॉर लूप को बेसिकली छोटा करना ही करना था। सो दैट इज वन कैच, and that's how you solve it basically. Again, the interesting thing is this tick function, and also this check interesting whether given a time whether it makes an interesting pattern or not. Right, so that's about it, and see you in the next problem. हमारी आज की आखिरी प्रॉब्लम है, it's from 2001 senior level problems called spirals. Again, इसके अंदर अगर आपने इस प्रॉब्लम को ट्राई नहीं किया, पॉज दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन पढ़ें गौर से, और ट्राई टू डू इनपुट एंड आउटपुट सैम्पल्स ऑल्सो। तो इसमें 2 इनपुट आउटपुट सैम्पल्स आपको दिए हुए हैं। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इनपुट एंड आउटपुट को, बट इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। सो इसमें बेसिकली करना ये है कि आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे इन सेपरेट लाइंस। सो पहली लाइन में इट्स गोइंग टू बी स्टार्टिंग नंबर, सेकंड लाइन में इट्स गोइंग टू बी एंडिंग नंबर, और दोनों नंबर जो हैं दे आर पॉजिटिव एंड दे आर लेस देन 100। पॉजिटिव का मतलब है इट कैनॉट बी 0, सो 1 से स्टार्ट हो सकते हैं और 100 तक जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी नंबर। और इसमें ये भी एक चीज़ गिवन है कि जो पहला नंबर है इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर देन द सेकंड नंबर बेसिकली। अब हमने करना ये है कि आपने एक स्पाइरल बनाना है विद द स्टार्टिंग नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्पाइरल, और आपने फिर नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है, ऊपर, बेसिकली एंटी काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको घूमते रहना है, और फिर जब तक आपका एंड वाला नंबर नहीं आ जाता आपने इसको बेसिकली घुमाते रहना है। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। इट्स साउंड सिंपल, लेकिन इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी कि इसको किया कैसे जाए। ओके, नाउ देयर कुड बी मैनी अप्रोचेस. The approach that I would follow is as follows basically. So सबसे पहला काम हम ये करेंगे इस ग्रिड को बनाने के लिए। पहले तो आपने सोचना है कि आपको ग्रिड चाहिए कितनी बड़ी, क्योंकि दोनों नंबर 100 से छोटे हैं, तो हमें कितनी बड़ी ग्रिड चाहिए होगी, 2 डायमेंशनल अरे, जिसमें कंफर्टेबली हम मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़ा स्पाइरल हम स्टोर कर सकें। So 100 numbers हैं क्योंकि, so this means कि it's going to make a square of 100 numbers, which means कि उस square की side जो है it
would be maximum 10 numbers, right? So 10 by 10 का एक बनेगा. So you could, to be on the safe side, you could have a two-dimensional grid of 11 by 11, ताकि अगर आप सेंटर से शुरू भी करें तो उसकी एक जो बाउंड्री है वो बच जाए, उससे बाहर ना निकले. You could do that, sure. So that's what I'm going to do. शुरू में what you could do is you can simply so basically let me show you what configuration that I have. So essentially this is what I have, a grid of -1s. This is what it is. So 11 इस side पे है. Every row, there are 11 rows, or every row has 11 columns. And then you start from the center after initializing this, right? अब जब सेंटर से स्टार्ट करेंगे, अब हमने करना क्या है? That's a good question. अब हमें तो नहीं पता कि स्पाइरल कैसे बनाना है. इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. Step number 1, can you write a program that starts from the center? By the way, अगर आपको पता है कि 11 by 11 की ग्रिड है, oops, I think I deleted minus. अगर आपको पता है कि 11 by 11 की ग्रिड है, तो what's going to be the center of this grid? So what's going to be the x value, the row value, and what's going to be the column value for this center, basically, for this 11 by 11. You have to define the starting point. That's number 1. All right. So basically, आपको पता चल गया कि आपने सेंटर से स्टार्ट करना है. तो what you do is, let's say हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं from 5 till 20 basically. तो आप सेंटर से स्टार्ट करोगे, आप इस स्टार्टिंग पॉइंट से फिर आप नीचे जाते जाओगे. अपना प्रोग्राम ऐसे अपने लिख लेंगे. यू जस्ट गो डाउन बगैर सोचे समझे, राइट? And figure out how to do that. So basically it's going to print 5, then it's going to print 6, then it's going to print 7. बस नहीं नीचे जाता जा रहा है बगैर सोचे समझे. It's not spiraling around. Then 8, and this is 9, and this is 10. अब क्योंकि आपका प्रोग्राम बाउंड्री से बाहर चला गया, तो either it crashed, या फिर आपने चेक लगाया हुआ था कि अगर बाउंड्री से बाहर जाए तो आगे मजीद नहीं जाना और प्रोग्राम को ग्रेसफुली टर्मिनेट कर देना है. So that is step number 1. आपने सीख लिया कि आपने डिटरमिन कर लिया कि सेंटर से शुरू होकर आपने नीचे कैसे जाना है कंटिन्यूसली. Similarly, now once you have done this, modify your program to go right ways. So basically, right ways, like let me show you. Something like this. Start from the center and go right ways. जब आप ये कर लें, modify your program to upwards and then modify your program to go towards the left. और लेफ्ट जाके it's going to crash, या आपने चेक लगाया होगा. लेकिन हम आप नोट करेंगे अभी घूम कहीं भी नहीं रहे. लेकिन जो स्पाइरल में घूमना है, that is a combination of these movements, up, right, down and left. अब क्योंकि आपने ये मूवमेंट एटलीस्ट अपने प्रोग्राम में बना ली हैं, तो you are in a good position. So basically now what we do is, now we create something called the concept of direction. So हम अपने प्रोग्राम में एक लिस्ट डिफाइन करते हैं जिसके अंदर we have defined directions like this. So इंडेक्स नंबर 0 पे आपके डायरेक्शन पड़ी हुई है डाउन, इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ा हुआ है राइट, इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा हुआ है आपका there's a tuple of course, और अप, और इंडेक्स नंबर 3 पे पड़ा हुआ है आपका लेफ्ट. एट दिस पॉइंट यू नीड टू मॉडिफाई योर प्रोग्राम सो दैट आप उसको जो मर्जी डायरेक्शन दो वो उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए. सो फॉर एग्जांपल आप उसको देते हो डायरेक्शन 1, तो इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मिडल एंड देन इट्स गोइंग टू गो राइट. फिर आप उसको अगर दोगे डायरेक्शन 2, इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मिडल एंड देन इट्स गोइंग टू गो अप. So once you have done that and once your program is acting on this direction, basically आप उसको हार्डकोर नहीं कर रहे कहाँ जाना है, उसको डायरेक्शन बताते हो और उस डायरेक्शन में वो जाता है, तो then you are in a very very good situation, or and you've almost solved this spiral problem.
अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्योंकि हमारा प्रोग्राम अब डायरेक्शंस के मुताबिक चलना शुरू हो गया है, ऑल वी नीड टू डू इज नाउ वी नीड टू जस्ट डिसाइड कि हमने राइट जाना है, अप जाना है, लेफ्ट जाना है या डाउन जाना है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. सो how do we do that? So for example, this is your input, start and end, sure, and then you define spiral equals to some two-dimensional list. जिस तरह भी आप बनाते हैं, मैंने इसको 11 by 11 की इनिशियलाइज विद -1s कर दिया था, और आप अगर चाहें तो आप शुरू में इतनी बनाएं सो दैट इट बेयरली कंटेन्स द स्पाइरल, और आपको वो बड़ी ग्रिड बनाने की शुरू में ज़रूरत ही नहीं है. ओके, नाउ व्हाट? सो नाउ बेसिकली you need to define that direction, and then you need to define what's your current direction. 0 का मतलब है कि you're going down initially, और current direction 1 का मतलब है कि you're going to the right. So basically आपका प्रोग्राम जो है, if it's acting on the current direction and moving in that direction, जो कि current direction define करती है, you have pretty much almost solved this problem. It looks hard but it's not, right? And then what we do is, for of course हमने कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, हमने start से लेके end तक जाना है, n+1 तक actually, क्योंकि 27 is included. So for I in range starting from 10 going till 27 plus 1, and actually this is not 27 plus 1, this is end plus 1, or start should be called start. Okay, now what? Now we have to do certain things. Number 1, add current number to the grid. Okay, उसके बाद हम क्या करेंगे? Calculate the next position, कि अगली पोजीशन आपने कहां पे मूव करनी है और अगला नंबर आपका कहां पे डलेगा बेसिकली. Once you have done that, once you have calculated, so basically आप देख रहे हो कि adding current number is easy. अब जो भी current position है वहां पे आपने जाके add कर देना. That's pretty easy. Calculate the next position. So this is also not that hard, because next position is going to be determined by the direction of your code, कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. नीचे जा रहा है तो नेक्स्ट पोजीशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर रो प्लस 1. कॉलम जो है इट्स ऑलरेडी 0, राइट? आई जस्ट गिव यू हिंट कि नेक्स्ट पोजीशन कैसे कैलकुलेट करनी है. एंड 3 वो आपने कर लिया. देन यू अपडेट. For now you don't have to do that. Step number 3, let's just skip that. And step number 3 is not very important for now. Step number 4 is when to change the direction. So step number 1 is easy, 2 is easy, 3 is not important, वो मैं बाद में बताता हूँ क्या चीज़ है. Step number 4 is the meat of our algorithm, our code here. So अगर आपने ये successfully कर लिया, you have solved the problem hands down. And this is pretty much the trickiest part of this code essentially. और तो उसमें कुछ भी नहीं है. How do we change the direction? और lastly, then once you have basically इसमें एक छोटा सा और not super tricky, a little bit tiny tricky, कि जब आपने spiral बना लिया पूरा, तो then how to print the spiral so that it doesn't contain any -1s basically. तो -1s को exclude करके आपने वो print करना है, और you have something like this, a shape like something like this, right? Right. So let's talk about number 4. How do we change the direction? Okay, let me quickly generate matrix. So this is 10, 27. Let me generate a matrix for 10 and 27. It looks something like this.
Okay, I need a new window here basically. So I can open in a new buffer, I think, but I don't know how to do that in NeoVim, which is a shame, but let me just open a new console. Okay, and Vim. So आप देख रहे हैं कि exactly यही spiral हमने generate किया है, which you can see on the output here. लेकिन यहाँ पे it is surrounded by minus ones, a lot of minus ones. So the trick is to ignore these minus ones and to print the value. But for right now we are talking about how do we decide whether when to turn. Okay, so here's when to turn. If your direction is towards the left, basically you're going towards the left side. यहाँ पे इसके बाद अगर अगले नंबर आते तो क्या होता? 28. अगला नंबर आता तो क्या होता? 29. अब लेफ्ट जा रहे हैं ना, और आप देखोगे कि यहाँ पे 28 जब आपकी डायरेक्शन लेफ्ट है तो 28 यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ गाय मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. 28 के लेफ्ट साइड पे क्या है 15, 28 के राइट साइड पे क्या है -1. सो अगर 28 के लेफ्ट साइड पे -1 नहीं है तो आप सीधे चलते जाओगे, यू डोंट चेंज डायरेक्शन. फिर आगे जाओगे 29 के लेफ्ट साइड पे -1 नहीं है, आप सीधे चलते जाओगे, यू डोंट चेंज डायरेक्शन. फिर आप करेंगे 30. अब इसके लेफ्ट साइड पे -1 है, so you change direction and then you start going downwards. So then 31 के लेफ्ट साइड पे -1 नहीं है, start going down. 32 के लेफ्ट साइड में -1 नहीं है. So basically जो मर्जी डायरेक्शन अगर उसके लेफ्ट साइड पे -1 नहीं है, you keep going in that direction. So 33 and then 34 and then 35. अब 35 के लेफ्ट साइड में -1 है, इसका मतलब है कि we change direction here. And if we were going downwards, now we are start moving towards the right. So 36, इसके left side पे भी -1 नहीं है. 37 and then we are going 38 and then 39 and then 40. अब 40 के left side में -1 है, इसका मतलब है कि we will be changing directions, and if we were going right, then we will start moving upwards. So आपको प्रीवियस डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो करंटली, और देन अगर वहां पे -1 आता है तो देन यू जस्ट इंक्रीमेंट दैट डायरेक्शन. तो ये बेसिकली अगेन मैं आपको छोटा सा हिंट दूंगा, ये स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे स्टोर की हुई है. डाउन के बाद आपने राइट मुड़ना है अगर -1 आता है, तो राइट के बाद आपने अप जाना है, आपके बाद लेफ्ट जाना है, एंड सो ऑन, यू नो. सो क्लेवरली स्टोर की हुई है डायरेक्शंस. और लेफ्ट के बाद आप वापस कहाँ पे जाओगे, यू नो, थिंक अबाउट दैट. So this is how we make spiral. और जैसे ही आपके पास अपर लिमिट आती है, you stop right there. Fine. That being said, आपके पास आपका spiral बन गया. Something like this. Let me just recopy that. Copy. Oh, this is it. There is it. Now, how do you, ignore these ones and just print this part only, जो बीच में आपको नजर आ रहा है. That's also, I mean, it's not very hard to do. आपको याद है कि आपने भी थोड़ी देर पहले वो पेंटिंग वाली प्रॉब्लम की थी जिसमें वो डॉट्स बना रहे थे और आपने फ्रेम कैलकुलेट करना था, मिनिमम फ्रेम, राइट? यू डू प्रीटी मच एग्जैक्टली दैट हियर एंड यू गेट दैट मिनिमम बाउंड्री. उसके लोअर कोऑर्डिनेट आ जाएगा लोअर लेफ्ट, अपर राइट कोऑर्डिनेट आ जाएगा उस फ्रेम का, एंड यू only have to print that frame from this matrix, and that's it. And that's pretty much done. I hope you understand the core idea and the strategy behind this seemingly hard problem, but it's not very hard, but it's a very good exercise in two-dimensional lists and loops basically. इसका फिर आप कोड लिखिए और see if it works, और अगर आपको ना समझ में आए तो let me know. Thanks.